Hello, my dear students. Hello, my dear students. Joy Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about B.Ed first semester Unit 3 ICT. Complete करिबा हमें Computer Fundamental and Application. Okay. तो तार सब पॉइंट कौन रोची ना टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कंप्यूटर विषय फर्स्ट हमें डिस्कशन करिबा. So let's go. Computer is an electronic device which is convert raw data into meaningful information. In other words, it can be called as a device which takes some input process. It gives output under the control of set of instruction given in a specific sequence known as a program. Okay. सो बेसिकली एते लंबा लाइन ना छोट मीनिंग होची कंप्यूटर होची गोटे एमिति का डिवाइस जोथिरे कि कोन होइथाय ना मीनिंगफुल इनफॉरमेशन रॉ डाटा जेतक सब ताको हमें कन्वर्ट करि थाउ कोन कहउथिरे ना अदर डिवाइस रे अदर प्रोसेस रे ताको हमें इनपुट कर थाउ तार आउटपुट हमें पाई थाउ. ओके देन गोटे सीक्वेंस रे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रे. ओके तो सब किछि जिंस रे गोटे माने न्यू वर्जन हमें पाई थाउ कोउथिरे ना हम कंप्यूटर रे. देन सी होची गोटे कोन नोन एज ए प्रोग्राम सीक्वेंस प्रोग्राम बोली हमें कंप्यूटर को कहि थाउ. देन आम आसला कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस. कंप्यूटर होची कोन ना गोटे इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस जोथिरे कि एक्सेप्ट एंड स्टोर जोथिरे कि हमें एक्सेप्ट करि परबा एंड स्टोर करि परबा इनपुट डाटा को प्रोसेस को. ओके डाटा आउटपुट को प्रोसेस रिजल्ट को सब किछि जिंस को हमें स्टोर करि रखि परबा. देन कंप्यूटर फुल फॉर्म कोन ना कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for trade and research in education. Okay तो कंप्यूटर फुल फॉर्म हमें जानी गले. देन commonly operated machine particularly used for trade and educational research. So Charles Babbage is called the father of computer. Father of computer के ना Charles Babbage. Four function about computer are करना access data and input, process data, processing, product, output, stores resource and storage. ओके एटा होची कंप्यूटर रे फोर फंक्शन. ओके देन आमे जानबा कोन ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कोन रहउची ना स्पीड कंप्यूटर रे स्पीड तार सिक्योरिटी तार एक्यूरेसी तार रिलायबिलिटी. ओके तार वर्सटाइलिटी तार स्टोरेज लेवल ए सब रहउची कंप्यूटर रे कैरेक्टरिस्टिक्स. देन तार स्पीड विषय जानबा कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकंड बिकॉज़ कंप्यूटर इज ए सुपर फास्ट मशीन. ओके तो फ्यू सेकंड रे कंप्यूटर कोन कर परबो ना एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन एंड एनी काइंड ऑफ वर्क को से कंप्लीट करि पारिबो. देन एक्यूरेसी मींस कोन ना कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट अबाउट द रिजल्ट. ईच कैलकुलेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज 100% करेक्ट. ओके सब कैलकुलेशन ने कंप्यूटर बाय एनी इज एवरीथिंग कंप्यूटर 100% करेक्ट थाए. देन automation means computer are automatically machine because once started on a job they carry out the job until it is disfinished. Okay so कंप्यूटर होची कोन ऑटोमेटेड मशीन जादर कि कोन ताकू जे कोनोसी जॉब बा जे कोनोसी वर्क हमें प्रोवाइड करबा से ताकू फिनिश करी के ही रहिबो. देन वर्सटाइलिटी कंप्यूटर इज वर्सटाइल डिवाइस बिकॉज इट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क. ओके कंप्यूटर कोन ना वर्सटाइल्स काहे कि ना गोटे समय रे एट ए टाइम से विभिन्न डिफरेंट प्रकार वर्क को से माने कंसिस्ट करि परिबो. ओके तो गोटे टाइम रे से डिफरेंट प्रकार वर्क को कंसिस्ट करि परिबो. सो कंप्यूटर इज ए versatile machine by versatility. Then storage computer have high storage capacity due to with they are stored large amount of data काहे कि ना कंप्यूटर large amount of data को store करि पारिबो. Then reliability computer is reliability machine that can be trusted for a long time. कंप्यूटर को हमें long time ले trusted करि पारिबा काहे कि ना reliables. Okay then reason that today every organization depend on the computer for its work काहे कि ना एबे प्रत्येक organization डिपेंड कहाँ ऊपरे ना इंटरनेट ऊपरे कंप्यूटर ऊपरे. देन सिक्योरिटी what is the biggest features of computer is that provides the high security password hide encryption. Okay then classification कौन है जी ना डिजिटल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर. तो फर्स्ट हमें जानबा का विषय ना डिजिटल कंप्यूटर विषय रे. व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर ना रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विथ द हेल्प ऑफ डिजिट as number of 0 to 1. ओके सेटा हमर फास्ट असला ना डिजिटल कंप्यूटर कम डिफरेंट शेप एंड साइज बहुत डिफरेंट शेप रे और साइज रे से आसुतला. देन पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तर थिला लार्ज मेमोरी स्टोरेज थिला. देन जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज इन एवरी फील्ड आको हम एवरी फील्ड रे यूज करि पारुथिले. देन असला हमरा एनालॉग कंप्यूटर ता मींस कोन ना प्रोसेस रिप्रेजेंट कंटीन्यूअस डाटा. ओके से रिप्रेजेंटली प्रोसेस करथला कोन ना कंटीन्यूअसली डाटा को से प्रोसेस करथला. देन एनालॉग डाटा इंक्लूड टेंपरेचर प्रेशर वोल्टेज वेट एक्सेट्रा. ओके
ସେତେବେଳେ जोटा आमर थिला कोन ना डिजिटल कंप्यूटर रे डिजिटल नंबर को डिनोट करथला देन एनालॉग कंप्यूटर रे कोन ना हमर टेम्परेचर हमर प्रेशर को हमर वोल्टेज को हमर वेट को से डिनोट करथला देन टेक इनपुट डाटा कंटिन्यूअसली एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एट द सेम टाइम ओके साइमल्टेनियसली से सब वर्क को करथला देन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कोन थिला ना थर्मोमीटर वोल्टोमीटर सिंपल वेट स्केलेटर ए सब थिला देन हाइब्रिड कंप्यूटर मींस कोन ना कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एनालॉग टेक्नोलॉजी तो ओके आउ हाइब्रिड कंप्यूटर कोन थिला ना कॉम्बिनेशन थिला काहर ने डिजिटल लो आउ एनालॉग कंप्यूटर रो कॉम्बिनेशन थिला के हाइब्रिड एबल टू एक्सेप्ट दैट इन आइदर फ्रॉम ओके एबल टू एक्सेप्ट डाटा इन आइदर फ्रॉम तो सी कौन थिला जे कोन से डाटा को से एक्सेस करि पारुथिला देन यूज एनालॉग डिजिटल एंड डिजिटल कन्वर्टर जो थे कौन ना डिजिटली कन्वर्टर भी थिला स्पीड तार बहुत थिला एनालॉग ग्रेटर कंट्रोल डिजिटल दीटा कंप्यूटर भितर एनालॉग आउ हमर जोटा सॉरी फास्ट हमर कौन थिला ना सॉरी फास्ट हमर डिजिटल कंप्यूटर थिला देन हमर एनालॉग कंप्यूटर थिला आद ए दी जण थारु हमर हाइब्रिड कंप्यूटर रो स्पीड बहुत बेसी थिला देन असला हमर कोन ना मेन फ्रेम कंप्यूटर ए पावरफुल मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मेनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली ओके मेन फ्रेम कंप्यूटर मींस कोन ना आकु साइमल्टेनियसली 100 टू 1000 पीपल्स माने यूज करि माने मल्टी प्रोसेसर भाबरे ये थिला काहे कि ना ये कैपेबल थिला मल्टी टू 1000 वर्क को एका सहित कंप्लीट करि बारे देन इट is the large computer terms of price power and speed ये large computer थिला जे कि any three kind of computer जोटा थिला हमरो digital analog and hybrid ताठरो mainframe computer super power थिला then this computer have large storage capacity आर भी लो ताको से तीन जण ठारू large storage capacity कार थिला मेन ना mainframe computer रो then these are used in large office like banks हमरो banks रे mainframe computer यूज होतला office रे ओके alternative OS रे सब ये कंप्यूटर को यूज करा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर देन असला सुपर कंप्यूटर कोठी ना अन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म 100 ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ओके पर सेकंड रे से 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन को से माने वेब करूला देन द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर आप कहा कहूले सुपर कंप्यूटर को दीज आर द वेरी एक्सपेंसिव ओके एग्जांपल फॉर व्हाटएवर फॉर फोरकास्टिंग यूज फॉर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ओके देन असला कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कौन ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर ओके कंप्यूटर कंपोनेंट्स चार्ट रोची गोटे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर मींस कौन हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट हैव फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज मॉनिटर एंड कीबोर्ड ओके कंप्यूटर जो फिजिकल स्ट्रक्चर रोची जोटा के टच करि पारुछे तार हार्ड पार्ट रोची जो ऊपर ऊपर माने पार्ट रोची ताको हमें कोन कहिथाउ ना हार्डवेयर बोली कहिथाउ देन हमरा असला the part of computer that we can touch and feel called hardware okay some of these parts are attached to through cpu through cables some are fixed inside the cpu ताको हमें hardware बोली कहता हूँ then hardware refers to the physical part or components of computer such as करना monitor mouse keyboard okay storage disk drive system एगुड़ा सब हमें हार्डवेयर बोली कहता हूँ देन असला हार्डवेयर कोथरे जाउची ना स्कैनर रे माइक्रोफोन ने ग्राफिक टेबल रे टच पेन ने लाइट पेन ने वेब कैम रे ओके टच स्क्रीन ने मॉनिटर रे कीबोर्ड रे माउस रे सब हार्डवेयर पार्ट रे जाउची देन असला सॉफ्टवेयर इट कंप्यूटर देन हार्डवेयर पार्ट्स नीड इंस्ट्रक्शन टू वर्क ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू मेक द वर्क आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर ओके तो बेसिकली कौन ना इंटरनल पार्ट जहाँ रोला कंप्यूटर जोटा कि कौन ना इंटरनाली वर्क करता ताको आम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट बोली कहते जो कि विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर केबे भी वर्क करि पारिबो नाही विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज यूजलेस ओके सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर भी यूजलेस तो बेसिकली जदि आमे कहिबा हमर बॉडी होची किए ना हार्डवेयर और हमर आत्मा होची किए ना सॉफ्टवेयर सो कंप्यूटर रा बॉडी होची सब माने हार्डवेयर पार्ट तार सोल किए ना सॉफ्टवेयर ओके देन सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टचड सॉफ्टवेयर को केबे भी आमे टच करि पारिबा नाही एग्जांपल विंडो वर्डपैड पेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कोन होची ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके तमे माने एबे आमे जानिथिबु जे आमे अपडेट मारुचे को ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर को सब अपडेट मारे ना तो ताको आमे केबे टच करि परिबो नाही एटा होची गोटे इंटरनल कनेक्शनिज्म ओके देन हमरा आसिला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोन ना दिस सॉफ्टवेयर डज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्क example paint is used for drawing WordPad is used for typing okay calculator is used for doing sums okay तो बेसिकली कौन ना ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा आम कौन करता ना पेंटिंग द्वारा ड्राइंग करता ओके वर्डपैड द्वारा आम टाइपिंग करता देन कैलकुलेटर द्वारा आम कौन करता ना सम को सॉल्व करता देन सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा कौन होता है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर
control manages the computer, system software also run the application software. Okay, system software कौन करता है ना application software को run करता है. Then operating system, this software manage all the activity of computer. Okay, operating system कहाँ द्वारा manage होता है ना all the system आम software द्वारा ही manage होता है computer रो. Then memory unit means कौन है ना memory is any physical device capable of storing information temporarily or permanently. मेमोरी गोटे एमतीका यूनिट जो थी कौन ना डिवाइस जितक सब स्टोरेज जिनस जितक डाटा सब स्टोर होकर रही है बेसिकली आम परमानेंटली कर टेम्पोरारी भी कर. देन मेमोरी इज एन आस्पेक्ट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट होल्ड द इनफॉरमेशन. इट इज द प्लेस टू और लोकेशन. ओके, गोटे लोकेशन वाइज रे कौन होता है ना कंप्यूटर जहाँ भी सब स्टोरेज डाटा रोचे से सब आक्सेस हो रही है. ओके, देन आवर आसला कौन ना एग्जांपल रोम, रैम, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. ओके, ये आम कौन करता ना कंप्यूटर डाटा को आम स्टोर करके रखी था आम मेमोरी यूनिट बोली कही था. देन प्राइमरी मेमोरी मीन्स कौन ना इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी. ओके, प्राइमरी मेमोरी को आम मेन मेमोरी बोली कही था. इट इज यूज फॉर इमिडिएट एक्सेस ऑफ डाटा बाय द प्रोसेसर. ओके, यार यूज आम के करता ना डाटा को इमिडिएट एक्सेस कर प्रोसेसर द्वारा आम प्राइमरी मेमोरी यूजेस करी थाउ. देन इट इज यूज एट द टाइम ऑफ प्रोसेस फॉर द प्रोसेस यूज विथ हिज प्रोसेसर. ओके, एग्जांपल कौन ना रैम, रोम, कैच मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी. ओके, देन असला हमरो रैम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, रैम मीन्स कौन ना रैंडम एक्सेस मेमोरी. आपको मन रखिबो रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज एन मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, volatile memory. It is a display memory. It is sometimes called physical memory. Types of RAM: dynamic RAM, SRAM means static RAM. Okay, दी टाइप रे RAM रहउची, गोटे होची डायनामिक आ गोटे होची स्टैटिक. DRAM means कौन डायनामिक RAM, SRAM means स्टैटिक RAM. ओके, तो फर्स्ट रैम को आम कौन कही ना रैंडम एक्सेस मेमोरी बोली कही था आम मेन मेमोरी कही था, टेम्पररी मेमोरी भी कही था कहीं से जहाँ भी आम डाटा स्टोरेज करता है टेम्पररी स्टोरेज होगी रही है. देन जोटा कि कैच मेमोरी से कौन ना डाटा टेम्पररी रही है. देन volatile memory बोली हम ताको कही था. देन ऐसा डिस्प्ले मेमोरी. सो DRAM मीन्स कौन ना रिक्वायर्स पीरियोडिक रिक्वायरमेंट. ओके, स्लोअर डायनामिक्स इन नेचर, देन मोर पावर कंज्यूम एंड चीपर. DRAM टा कौन ना आम स्लोली माने यूज होता है जो कि कौन ना मोर पावर को कंज्यूम करते हैं, बहुत माने अधिका पावर को से कंज्यूम करते हैं जोटा कि चीपर माने चीप क्वालिटी भी हमको मिल जाए. देन SRAM मीन्स कौन ना इट रिटर्न डाटा बिट्स विदाउट पीरियोडिक इंस्ट्रूमेंट. ओके, रिफ्रेशमेंट. देन इट इज द फास्टर एंड स्टैटिक इन नेचर, लेस पावर कंज्यूम एंड कॉस्टली. ओके, जिते बेले DRAM टा चीपर होता है, SRAM टा हमारा कॉस्टली होता है कहीं ये डायनामिकली कौन करता है ना फास्टली डाटा को कंज्यूम करता है रिफ्रेशमेंट करता है. देन आसला हमारा रोम. फास्ट हमारा आसला कौन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. देन हमारा आसला कौन ना रोम मीन्स कौन ना रीड ओनली मेमोरी. ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी. देन हमारा आसला रीड ओनली मेमोरी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोस चिप जोटा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रे तम देता है. देन इट इज ए परमानेंट. सेटा जदि हमर टेम्पररी रहउची रैम टा, रोम टा हमर परमानेंट. ओके, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, एटा वॉलेटाइल नुहे. देन इट इज कॉल्ड फ्रीमवेयर. ओके, फ्रीमवेयर अगर सर्टेन फ्रेम था सेक्शन थाए. देन आसला इट परफॉर्म बूटिंग प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस. ओके, कौन करता है ना बूटिंग प्रोसेस देता है एंड पोस्ट प्रोसेस को भी शो ऑफ करता है. देन टाइप ऑफ आर तीन टाइप रहउची पी रोम, ई रोम एंड डबल ई रोम. ओके, सो पी रोम मीन्स कौन ना प्रोग्रामेबल रोम, ई प्री रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. देन डबल ई पी रोम मीन्स कौन इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. देन आम जाना सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मीन्स कौन ना इट इज ए होयर प्रोग्राम्स डाटा आर केट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिक. ओके, जो कि कौन ना आम डाटा को लॉन्ग टर्म बेसिक पाई केट कर रखिपर माने एक्सेस करके रखिपर. देन इट इज ए लार्ज वॉल्यूम स्टोरेज डिवाइस. लार्ज वॉल्यूम स्टोरेज थाए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी एंड क्लारिफाइंग मेमोरी. ओके, तो एग्जांपल कौन हार्ड डिस्क, CD, DVD, HDD, FD एक्सेट्रा. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम रे कौन आमर ना DOS, विंडो मसिंटोस, मोबाइल एप्स एंड टेक्नोलोजी. ओके, ये सब आसूची जो कोटा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आम यही सब द्वारा आम डाटा को ऑपरेट करी था विंडोज द्वारा. ओके, मोबाइल एप्स पर टेक्नोलोजी द्वारा. देन आम जाना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन
Now, operating system is an important component of computer system. It can be defined as a set of programs that control how the systematic works. It provides an interface between the user and the hardware of computer system. Okay, operating system कौन करते हैं important component होउची हमर कंप्यूटर जोथिरे कि करो ना हमें डिफाइन करि थाउ प्रोग्राम को केमती कंट्रोल करिबा सिस्टम केमती वर्क करिबो ओके माने सिस्टम आ कंट्रोलर विषय कंट्रोलर बिटवीन तांकर माने इंटरेक्शन केमती रहउची तांकर रिलेशन केमती रहउची ओके यूजर द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आदरा कोन होइथाय ना हमें हार्डवेयर भी यूज करि थाउ एवं कंप्यूटर सिस्टम को एनालाइज करि थाउ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा देन असला यूजर माने तबे माने मु देन एप्लीकेशन द्वारा हम यूज करिबा देन ऑपरेटिंग सिस्टम को जानिबा देन हार्डवेयर ओके सो यूजर 1 यूजर 1 करना सॉफ्टवेयर यूजर 2 मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम देन सीपीयू रैम एटा सब हार्डवेयर रे जाउची देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रे भी जाउची ओके सो यूजर 1 ने आसीबो किया ना सॉफ्टवेयर यूजर 2 रे माने सब आसी जिवो हार्डवेयर जो बन रहउची ऑपरेटिंग सिस्टम रे सीपीयू रैम रोम ओके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ए सब आसी जिवो देन आसला हमरा ऑपरेटिंग सिस्टम कोन ना एप्लीकेशन हार्ड ड्राइव कीबोर्ड माउस ओके प्रिंटर मॉनिटर ए सब ऑपरेटिंग सिस्टम रे आसी जिवो या द्वारा ही कंप्यूटर को देना ऑपरेटिंग हेई थाए देन process of operating system कौन now the operating system is loaded automatically into the computer whenever we start the computer okay operating system already कही था ना automatically loaded है कि था जितने हमें computer को start करी बस ये operate है था then more than one type of operating system can also be installed on one computer but at one the only time operating system will be functional okay basically कौन ना operating system टा हमारा already install है कि था ज़्यादा रखी कौन computer कौन करते ना one time रे operating system को functional करिथाय ओके देन असला once the OS started off you manage all of the software hardware of computer ओके कोन ना जेतला हम कंप्यूटर को स्टार्ट करिबा हम कंप्यूटर को मैनेज के करथाय ना हमरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर माने कंप्यूटर रो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करिथांती देन work of operating system कौन ना most of time there are many different programs running at the like same time and they all need to access your computer CPU memory and storage basically कौन ना हमें कहू थाउ कौन ना हमारा बैकग्राउंड डाटा गुडा रन करछंती जो एप्स गुडा हम रन करथन ताको हमें कोन कहि थाउ ना बैकग्राउंड डाटा रन करछंती सो सेही टाइम रे कोन होइताय ना गोटे साइमल्टेनियसली गोटे टाइम रे विभिन्न प्रकार एप्स गुडा विभिन्न प्रकार सिस्टम गुडा बैकग्राउंड रे रन करन तो सेमन कोन करथन ना मेमोरी रे मोर डाटा को स्टोरेज को एक्सेस करिनेंती देन the operating system coordinating all of these to make sure that each program gets what it needs okay then without OS software would not even be able to talk to the hardware and the computer would be useless operating system perform basic tasks such as कौन ना देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बिना हम कंप्यूटर किछि भी नुहे ओके हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर रो किछि भी मायने रहू नाही देन हमें जानिबा कौन रहउची सच एज कौन ना रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड ओके स्पेंडिंग आउट ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन कीपिंग करबा ओके टास्क अप्लाई करबा डायरेक्शन दबा डेस्क एंड कंट्रोलिंग फ्रेजल करबा ओके डिवाइस सच एज डिस्क ड्राइव प्रिंटर्स ए सब को कनेक्ट कर देखिबा ऑपरेट करबा ओके ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कौन ना कंप्यूटर को हमें क्यों क्यों एप्स द्वारा क्यों जेनरेशन द्वारा ओके क्यों न्यू फॉर्मेट द्वारा हमें ऑपरेट करछी ताको हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बोली कहि थाउ ओके त कीबोर्ड माउस मेन फ्रेम मेमोरी स्टोरेज रैम रोम etc. Then for last system this OS have even generated responsible powers कौन ना for it is responsible for security ensuring भी हमको कंप्यूटर देता है then unauthorized use do not access the system ज़्यादा रखे कौन ना जी भी अन्य कौन सी unauthorized person बा unauthorized apps हो कौन सी random माने वायरस हो सी केबे भी एक्सेस करि परिबे नै हम कंप्यूटर को then function कौन ना प्रोसेस मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट ओके मेमोरी मैनेजमेंट देन डिफेक्ट्स एरर्स को जाति बताओ डिफेक्ट्स करिवो देन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट देखिवो प्रोवाइडिंग सो ड्यूरिंग प्रॉब्लम लोडिंग ओके जहाँ भी लोडिंग प्रॉब्लम हो तो ताको माने क्विकली ताको सॉल्व करिबा ओके आर सब फंक्शन रहउची कंप्यूटर सिस्टम रो देन हमर आसिला कोन ना DOS कौन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS is a disk operating system used for operating the disks developed by Microsoft Corporation in 1981 with the name as MS
POS version 1.0 DOS. Okay, does more than we just operated this disk. तो बेसिकली DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एटा केबे ऑर्गेनाइज हेतिला कहा द्वारा ना सिस्टम यूज फॉर ऑपरेटिंग कोथिला ना 1981 रे हेतिला MS डॉक्स वर्जन का अमेरिका रे. ओके देन 1.0 DOS. ओके सो देन it enables the user organize data files, load, execute program files and control the input output device attached to the computer. Okay, आर बेसिकली काम कौन ना DOS रो ना ये ऑर्गेनाइज करिबो डाटा फाइल्स को. ओके एग्जीक्यूट करिबो प्रोग्राम फाइल्स को आ कंट्रोल करिबो इनपुट आ आउटपुट को. ओके डिवाइस को अटैच करिबो कास तने कंप्यूटर सहित एग्जाम सॉरी प्रोग्राम को एग्जामिन करिबो एवं तार कंज्यूम को सॉल्व करिबो. Then about DOS, DOS is a single user of single tasking operating system which provide character user interface area based interface. Okay, तो basically कौन DOS कौन करते हैं ना single user सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कौन ना कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एरिया को से प्रोवाइड करी थाए. देन इंपोर्टेंस कौन रोची ना इट प्रोवाइड स्कैन डिस्क यूटिलिटी दैट हेल्प टू डिफेक्ट डायग्नोस रिपेयर डिस्क एरर्स. ओके जहाँ भी हम डिस्क एरर्स थी ताको डायग्नोस करिवो ताको आइडेंटिफाई करिवो एवं ताको डिलीट करिवो. ओके देन इट अलाउस द यूजर रिट्राइव डिफेक्ट फाइल यूजिंग अनडिलीटेड कमांड. ओके कौन करता है ना रिट्राइव आम जो फाइल ताको थाए ताको रिट्राइव करि थाए जोटा कि हम अनडिलीटेड कमांड द्वारा यूज कर देता जो डिलीट हो जाता आम रिट्राइव कर. देन DOS की कमांड ऑफ द MS डॉक्स recalls the previously types commands that can be edited. ओके तो हमें प्रीवियसली जहाँ भी हमें डिफिकल्ट बा एडिट करते ताको हमें आफ्टर सम टाइम रे ताको हमें एडिट करि परिबा ताको हमें रिस्टोर करि परिबा. ओके इट अलाउस टू नैरेटिव डाटा फ्रॉम फॉर्मेटेड डिस्क बाय यूजिंग ऑन फॉर्मेट कमांड. ओके तो कौन ना आम जहाँ भी डाटा को माने फॉर्मेटली फॉर्मेट कर देता तो आम कौन कर ना ऑन फॉर्मेट कमांड द्वारा आम ताको रिट्राइव करि परिबा. ओके देन आम आसिला सॉरी हाँ देन आम आसिला विंडोज. ओके Windows. Okay, Windows is very user-friendly, popular, developed by Microsoft Corporation Company in 1985. Okay, Windows was a very friendly and popular corporation but popular innovation Microsoft जोटा कि 1985 रे innovation होइतिला. Windows were a single user operating system initially but after Windows 98 it was turned at multi-user multitasking OS. Okay, तो बेसिकली आमर विंडोज रे ही कंप्यूटर को एक्सेस करा जाता है. कंप्यूटर मल्टीटास्किंग पावर विंडोज रे ही थाए एवं ऑपरेटिंग सिस्टम सब किछि विंडोज ही हैंडल करि थाए. ओके सेटा केबे स्टार्ट हेतला 1985 रे देन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा. देन इंपोर्टेंस कोन रहउची ना कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग रोची. फोल्डर कैन बी डन इजीली. ओके फोल्डर आम इजीली करि परिबा मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी रहउची. क्रिएटिंग डिलीटिंग कॉपिंग फाइल्स होबो. देन इट रन्स ईच एप्लिकेशन इन इट ओन सेपरेट विंडो. ओके देन आसला इट सपोर्ट वेरियस मल्टीमीडिया एप्लिकेशन. देन आम आसला कोन ना मैक OS जोटा कि आम मैकिन्टोश बोली कहि थाउ. ओके मैकिन्टोश. देन आसला मैक. So the Macintosh OS is an OS system designed by Apple to be installed and operated on the Apple Macintosh series computer. Okay, so बेसिकली आमर मैकटा क्या द्वारा ऑर्गेनाइज है डिजाइन है ना एप्पल द्वारा. ओके इट ऑपरेटेड एप्पल देन सीरीज कंप्यूटर. सो इंट्रोड्यूस इन कौन ना 1984 रे एटा ऑर्गेनाइज होता ग्राफिकल यूजर पाई इंटरफेस पाई देन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम करिया पाई. देन सिंस बीन रियलाइज्ड मल्टीपल डिफरेंट वेरियस इनिशियली मैकोस was known as system software. ओके मैकोस भाव में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करछे ताको हमें मैक्स रो डिफरेंट वर्जन बोली कहि था मैक्स रो माने गोटे ग्राफिकल डिजाइन इंटरफेस बोली हमें कहि था. देन मोबाइल एप्स फॉर लर्निंग कौन ना एडवांटेजेस कौन रोची ना इजी टू एडिट फोटो फ्रेमिंग कॉलेज आर्ट एक्सेट्रा. ओके देन शॉपिंग एंड आइटम इजीली. देन बैंकिंग रिचार्ज वेरी इजीली वेरी फास्ट डाउनलोडेड गेम. okay updating software is very easy to use app. then internet browsing very easy and out any knowledge to use mobile apps. okay आदर कौन ना हमरे बेसी प्रोफेशनल मोबाइल एप्स मैनेजमेंट हे पारुची जादर कि कौन ना सब किछि जिंस हमें इजीली कंडक्ट करि पारुची आर एडवांटेजेस रहिला. देन असला हमरा
Software for word processing, presentation, statistification, graphical page layout, okay, multimedia, web page creator, ଏସବୁ uses ରହୁଛି। then ଆମର ଆସିଲା word processor କ'ଣ ନା the word processor is an application software which is capable to creating, editing, saving, printing and document। okay, word ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ ୱାର୍ଡ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ରୋସେସର ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ୍ରିଏଟିଂ କରିଥାଉ, ଏଡିଟିଂ କରିଥାଉ, ଓକେ, ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିଥାଉ, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିଥାଉ। ଦେନ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ସୁଡ୍ ବି ନେଭର ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ text editor such as Notepad, which only allow us to create, edit plain text, whereas while using a word processor we can make changes, literate the text। okay, basically କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା କେବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇନଥାଉ ଆମର ମାନେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ ଟେକ୍ସଟକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ଲେନ୍ ଟେକ୍ସଟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ସଟ ହେଉ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିବା। ଓକେ, ଆମ ଟେକ୍ସଟରେ ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଇରେଜ୍ ସ୍ପିଡ୍, ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି, ଫର୍ମାଟିଂ ରହୁଛି, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହୁଛି, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନିଂ କରିପାରିବା, ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବା, ଓକେ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ସ୍ପେଲିଂ ଚେକ୍ କରିପାରିବା, ମେଲ୍ ମର୍ଜ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କିଂ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କିଂ ନା ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ 2 or more computer or computer device connected in a form of communication technology is called network। okay, computer network କ'ଣ ନା ଏ ଗ୍ରୁପ or 2 more computer କ'ଣ କରିବେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ। ଓକେ, ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ୍ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ସେୟାର୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଅର୍ ୱାୟାର୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ତା'ର ନା ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ, ପ୍ରିଣ୍ଟର ସେୟାରିଂ, ମିଡ଼ିଆ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏସବୁ ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମଡେମ୍, ହବ୍, ନାଇସ୍ ଯେଉଁଟାକି ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଓକେ, ଦେନ୍ ଗେଟୱେ ରହୁଛି, ରାଉଟର ରହୁଛି, ବ୍ରିଜ୍ ରହୁଛି, ସୁଇଚ୍ କରିବା ରହୁଛି, ଓକେ, ଏସବୁ ତା'ର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପାୱାରଫୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଗୁଗୁଲ୍, ୟାହୁ, bing.com, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଯାଉଛି। କ୍ରୋମ୍, ଦେନ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଟ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି। ଓକେ, ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଆବିଲିଟି ଟୁ ଡୁ research from your home, okay, it provide free mail service to anyone in the country, okay, then news of all kind it available most on continuously। okay, so ଏଠି କ'ଣ ନା ଭେରିୟସ୍ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ, ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ। ଓକେ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫ୍ରି ମେଲ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ରିଲି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁଛେ, ଏନିୱାନ୍, anything, anywhere and any each। okay, so आर सब advantages हमें जानिले। then disadvantages कौन रहुछि ना people are getting addicted to the internet। people माने कौन ना addicted हे होचंदी internet सहित। then hacker can use the internet for identification theft। okay, hacker माने hacking कर दोचंदी तांगर identification theft पाए। then waste easy to a lot of time and the interact। okay, time no waste होछि। then various kind of wrong information of internet added by wrong users। okay, wrong user द्वारा wrong information हमें पाइबाकू पाइथाउ। then हमें जानिबा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, जोटा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल बोली कहिथाउ ताको हमें ईमेल बोली कहिथाउ। मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक means from one computer user to one or more recipient via network। ओके, आमे गोटे कंप्यूटर साहाଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ ବା ଗୋଟେ ମେଲ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା 1 ରୁ more ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପ୍ଟାଣ୍ଟକୁ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଭାୟା ମେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ, ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ, ତାକୁ ଆମେ ଇମେଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ ତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଇମେଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ସେଣ୍ଡିଂ ରିସିଭିଂ ମେସେଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓଭର ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଆଟ୍ ବି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଓକେ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମେସେଜକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବା, ସେଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଇମେଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚିପ୍ ହ୍ୱେନ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଅଦର ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଓକେ, ଅଦର ମୋଡ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଆ ତୁଳନାରେ ଇମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଚିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ରହୁଛି। ଦେନ୍
advantages कौन रोचे ना email are easy to use very fast okay then तार disadvantages कौन ना email mainly carry माने viruses रे रोचे जोटा कि बहुत प्रकार viruses को email carry करता है then the language used in email is simple and formal but disadvantages रे कौन ना many people send unwanted emails to other these are spam mails ओके बेसिकली जदि इमेल गोटे पटे आमर आडभांटेजेस को क्यारी करुच्ची आ गोटे पटे डिसएडभांटेजेस को भी क्यारी करुच्ची देन आसला आमर कौन ना email do not use paper they are environment friendly आउ email cannot really be used for officially document ओके बेसिकली आम email को official document पे यूज एते भी यूजेबल नुहे बट